बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। एक एंटी कोटा स्टर ने स्ट्रीट पार का रूप ले लिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी त्यागपत्र देना पड़ा। आज बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है, जिसको हेड कर रहे हैं नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस। पर इस इंटरिम गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। जो सड़कें हैं, जो रोड साइड्स हैं, वो पूरी तरह से जमाते इस्लामी और उसके इस्लामिक छात्र शिविर के हाथ में है। ये फोर्सेस जो हैं, ये एंटी इंडिया फोर्सेस हैं। बहुत दिन से एक एंटी इंडिया कैंपेन, जिसको इंडिया आउट का नाम दिया गया था, वो कैंपेन पिछले 6-7 महीनों से बांग्लादेश में इस पार्टी द्वारा और इसकी सहयोगी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा चलाया जा रहा था। शेख हसीना बहुत दिन से इस बात की तरफ कह रही थी कि यूएस इंटरफेयर कर रहा है बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में। तो बांग्लादेश का भविष्य क्या है, वहाँ के हिंदुओं का भविष्य क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस सारी अस्थिरता का प्रभाव भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पे क्या पड़ेगा, इन सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए आज हम जुड़ने जा रहे हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत से। एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत भारत के राजदूत रह चुके हैं लीबिया, जॉर्डन और माल्टा में। आइए हम जुड़ते हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत से। नमस्कार और संवाद महंग में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर, शुरुआत में द फर्स्ट क्वेश्चन सर, बांग्लादेश वी ऑल नो इज इन टर्मोइल। Sheikh Haseena, the elected prime minister, had to flee from Bangladesh. The chief justice of the Bangladeshi Supreme Court उनको रिजाइन करना पड़ा है। हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं सर, वहां पे एंटी इंडिया मूवमेंट जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। स्ट्रीट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द जमाते इस्लामी एंड द इस्लामिक छात्र शिविर, इट्स स्टूडेंट्स विंग। तो सर, इसके पहले शेख हसीना काफी यूएस को उन्होंने इंटरफेरेंस के लिए, शी वाज ब्लेमिंग इन यूएस फॉर द इंटरफेरेंस। So in a nutshell, sir, we have seen what Bangladesh has gone through during the past 10-12 days, sir. How do you summarize the situation in Bangladesh as of now? Well, I think it's a very unfortunate situation which has happened due to many factors. One can analyze governance issues is one of them, alienation of people or disconnect with the government is another, external interference is third, coalition of all the opposing forces together who did not participate in the electoral process but got together against this. And thirdly, there was a trigger, and the immediate trigger was reservations. And as you know, the reservations is always in any country, especially in our countries, where jobs are few and far between in South Asia. Countries are going through developmental issues, jobs, unemployment, all those problems are very much there. And the economy is not doing that well. So the government is unable to provide for the people, and then therefore one sees that there is a disconnect and discontent. So I think the discontent that was displayed by both genuinely aggrieved students who thought that their future was at stake, and the various, I would say, unsocial elements which took advantage of the situation to create a mayhem. And the political party is then supported in order to oust Sheikh Hasina. As you know that Supreme Court intervened, and in fact this was not even a charge, should not be a charge against Sheikh Hasina government, because her government had in fact gone against the High Court ruling to stop the reservations. And so that was not an issue. But the way the police handled, the way the authorities dealt with, the way some accusations of Razakars and all came into being, it really inflamed the public opinion. And if you know, the Bangladeshi students basically have always been on the forefront of so many uh, demonstrations, protests, and basically removing the governments. It's not the first time that it has happened. But I think that there is a they will have to now bring the government under control, the country under control,
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको कंट्रोल में लाना है। दूसरा चीज, जैसा माइनॉरिटीज के खिलाफ हमने देखा कि काफी सारी शिकायतें आई हैं और उनके खिलाफ मंदिर तो में जाके किया है। और तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक वहाँ की अजीब सी कल्चर रही है। तो उसमें कुछ पार्टी जैसे जमात इस्लामी है या रेडिकल फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, वो सब मिलकर के उसका लाभ उठाते हैं ऐसे में। मेरा मानना ज्यादातर ये है कि देखिए, बांग्लादेश में बंगाली कल्चर जो है और भारत के साथ उसका बड़ा एक कनेक्ट है। और कल्चर जो है वो कई बार रिलीजन थोड़ा ऊपर होती है, तो वो कनेक्ट है भारत के साथ में। बंगाली चाहे हमारे इस साइड के हों या उस साइड के हों, दोनों के बीच में मैं वहां पे सर्व किया है तो मैंने देख रखा है। लेकिन उस सब के बावजूद जिस वक्त ये मोबोक्रेसी होती है, तो वहां पर आप देखिए कि लोग भूल जाते हैं और उसमें अपने, जिसको कहते हैं एक तरह हिंदी में उल्लू सीधा करना या एक तरह की सिचुएशन क्रिएट करना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सरकार के लिए है, क्योंकि इससे दो चीजें हैं। एक तो ये कि देश के अंदर अशांति फैल रही है, जो भी 1.5 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं वहां पर, उन्होंने वो बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन्होंने ढाका के अंदर बताया। और इतनी सारी रिपोर्टिंग हो रही है जो देश के लिए भी ठीक नहीं है, और उनकी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी हमने देखा कि उनके जो होम मिनिस्टर इंटरिम में है, उन्होंने माफी भी मांगी कि भाई हम आप लोग को वो नहीं दे सके, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो डर के मारे आई नहीं है स्ट्रीट में, वो काम ही नहीं कर रही। आर्मी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जो भी सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन जब तक सारी आर्म्स, जो सिविल जो फोर्स होती है, पुलिस, उसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो वो इसकी वजह से इस वक्त सिचुएशन है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर की तरफ से हमारे यहाँ। सर, आगे बढ़ते हुए सर, शेख हसीना, शी वाज ऑलवेज एक्यूजिंग द यूएस ऑफ इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश सर। यूएस ने आज उनका उस चार्ज को, दैट इंटरफेरेंस हैज बीन डिनाइड, कि उनका है कि हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं था। बट देयर सर्टेन पॉइंटर्स सर, जो लीड्स, जो कि काफी डाउट डालते हैं वेदर दे वर इंटरफेयरिंग और नॉट सर। आई विल गिव यू few examples sir. The call from the US, regular calls about free and fair elections, the sanctions they imposed against the Rapid Action Battalion, which is a paramilitary force in Bangladesh. And Sheikh Haseena and Bangladesh were not even invited for the democracy summit in US, where ironically Pakistan was invited. Then, sir, visa restrictions against individuals for undermining the democratic process in Bangladesh. And then the latest statement about the geopolitical interest in St. Martin's Island. सर, आप इसको काफी एक डिप्लोमेट के तौर पे, एक एनालिस्ट के तौर पे हर तरीके से देखते हैं सर। सो ये, और इनफैक्ट एक सर आगे भी देते हुए कि व्हेन दिस होल थिंग टुक प्लेस, इसको मैं, इट वाज अ सॉफ्ट कू सॉर्ट ऑफ अ थिंग सर, नॉट एग्जैक्टली अ मिलिट्री या इंटरवेंशन, सॉफ्ट। but a removal of a government, duly elected government. The US statement basically, they welcomed the announcement of interim government and urged transition as per Bangladeshi law. Sir, law to ye tha ki the government was removed by force. So obviously the law was broken. So what law were they talking about? So, आप सर, how much value do you give to this interference statement कि यूएस इसमें इंटरफियर, क्योंकि इनकी सर एक टेंडेंसी भी है सर, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में, अरब रेवोल्यूशन उधर चल रहे थे। सो इसमें कुछ सब्सटेंस है और जस्ट क्या कहा जाए सर, एक तरह से। देखिए, जो भी चीज हम देखते हैं इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट, और जितने आपने कोट किए हैं इंस्टेंसेस, उसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टेंस लगता है वो ये है कि जब उन्होंने डेमोक्रेसी समिट की, तो वहां पर पाकिस्तान को तो बुला लिया एज ए डेमोक्रेसी, जहां पर 1000 क्वेश्चन खड़े हुए हैं उनके ऊपर में। और बांग्लादेश जहां पे अगर 100% नहीं तो कुछ हद तक काफी कुछ फेयर इलेक्शन हुआ है, क्योंकि दूसरी पार्टीज ने बॉयकॉट किया है। तो जो पार्टी बॉयकॉट करती है किसी भी रीजन की वजह से, तो जो रिमेनिंग पार्टी है वो जीतती है, तो आप उसको कह सकते हैं। लेकिन ये एक बार नहीं है, कई बार हुआ। उनके स्टेटमेंट्स, मैं वहां पे था 2 साल पहले, एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहां पर उनके एम्बेसडर जो थे वो भी ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, मीडिया में भी बोलते थे। और उनका सपोर्ट बेसिकली शेख हसीना ने को, ये मैंने यहाँ तक सुना है, वो ये है कि वो चाहते थे कि वो चीन के साथ रिश्ते कम करें, उनको ज्यादा वो ना पहुंचाएं। तो ये साइनो यूएस कॉन्टेस्टेशन जो है, उसका भी एक हिस्सा है। तो ये अमेरिकन का भी एक स्टैंडर्ड टूल किट होता है कि डेमोक्रेसी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे आप लोगों में एक शांति फैला दें, और वो फिर एक ऐसा क्रिटिकल मास हो जाता है
कि वो गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना मुश्किल है, और ऐसा हमने बहुत जगह भी देखा है। लेकिन उस सब के बावजूद ये तो है ही है फैक्टर्स, कुछ इश्यूज तो डेफिनेटली वहां पर हैं, क्योंकि लोग अगर एलिनेटेड फील करें एक उस सरकार के प्रति जिसके पूर्वजों ने, जिसके पेरेंट्स ने, फादर ने उनके, देखिए एक देश को एक नाम दिलाया, उसको एक इंडिपेंडेंस दिलाई, और आज वो जो हो रहा है वहां पर, वो मैं समझता हूँ कि कितना एक 180 डिग्री टर्न जो जिस तरह से हो गया है सिचुएशन का, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक सिचुएशन है जिसको अवामी लीग पार्टी को भी देखना पड़ेगा इसमें पूरी तरह से, कि वो क्या, क्यों हुआ ऐसा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बात तो है कि डेमोक्रेसी अगर है, तो डेमोक्रेसी में आपको लोग सबसे ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन ऑन द स्ट्रीट। So the people are the most important people. They are the deciding voice, and this is true for all governments in any democracy. तो देयर फोर आई थिंक ये कि अभी तो चलिए सिचुएशन खराब है जो भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और ये जो बाहर की जो बड़े बड़े पावर्स हैं, उनकी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए वो डेफिनेटली इस तरह की कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो असिस्टेंस के जरिए हो या कुछ है। इसमें मैंने कई बार देखा है। देखिए चाइना के साथ में शेख हसीना की कोई समस्या नहीं थी, वो तो चाइना के साथ भी काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि चाइना को उन्होंने सबमरीन उनके आने दिया, ये वो, तो अमेरिका साइनो कॉन्टेस्ट में तो लगता है डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि उनको ये लगता है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इंडो पैसिफिक में वो हो जाएंगे। मैंने ये भी सुना था कि क्वाड के लिए उनको इनवाइट किया था बांग्लादेश को, तो उन्होंने मना कर दिया। तो बांग्लादेश एक तरह से अपनी थोड़ी इंडिपेंडेंट सी फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहा था उस वक्त शेख हसीना के अंदर में। अब देखना यह है कि आप बोल रहे हैं कि बैलेंस फॉरेन पॉलिसी हम करेंगे, तो देखिए वो बैलेंस फॉरेन पॉलिसी किस हद तक कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट के लोग हैं, या जो आर्मी वाले भी हैं, दूसरे भी हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न एजुकेटेड ही, और उनके कनेक्शन भी वहाँ काफी स्ट्रांग है। और बीएनपी खालिदा जिया को भी यूएस सपोर्ट करता है, तो देखना पड़ेगा अब किस तरह से ये मूव करता है आगे। सर इसको आयरनी कहा जाएगा कि 1971 में जब पिंग पोंग डिप्लोमेसी चल रही थी तब भी बांग्लादेश सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सर, और आज जब पिंग पोंग डिप्लोमेसी एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है जिसको कहा जाए सर, उस समय भी बांग्लादेश कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। कितना जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है तो शायद हम लोग नहीं जान पाए सर अभी, बट समहाउ एक बीच में सर एक फोकस तो उस पे है ही जरूर। आगे बढ़ते हुए सर, अब द इंडिया फैक्टर, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ सर एक पूरा प्रोग्राम चल रहा था इंडिया आउट, जिसके मेन कहा जाता है, जिसको कहिए कि सर जो सूत्रधार थे वो तारिक रहमान ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अभी मोहम्मद यूनिस साहब ने टेकन ओवर एज द इंटरिम गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, तो उनका एक स्टेटमेंट आया सर विच विच जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा सर, जो आई एम कोटिंग हिम सर, इस कोट, इंडिया डिडंट फोकस ऑन बांग्लादेश, दे फोकस्ड ऑन ओनली वन पर्सन, people are angry because India supported Sheikh Haseena, that is one. The second quote sir, Bangladesh is hurt as India called anti-quota stir as Bangladesh's internal matter, unquote. वैंडलिज्म हो रहा है, शायद शहीद उनका मेमोरियल जो है, जो पाकिस्तान का सरेंडर है, उसका वैंडलिज्म हुआ, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर पे अटैक हुआ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस इन बांग्लादेश, वेयर एज एक सामान्य नागरिक के तौर पे, एज अ कॉमन सिटीजन, आई वुड से दैट वी आर फ्रेंडली टुवर्ड्स बांग्लादेश। आपने कहा सर कल्चर सुपरसीड्स एवरीथिंग एल्स, बट समहाउ रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि इस ट्रांजिशनल स्टेज में लोग शेख हसीना को ये बनाना चाहते हैं कि शेख हसीना और हिंदुस्तान एक साथ हैं, सिनोनिमस बना दिया है ग्रास रूट लेवल के ऊपर। और जब ये लीडर्स इस तरह की बात बार बार करते हैं, मैंने देखा है कि काफी लोगों को ये बड़ा फैशनेबल होता है, और मैं कई बार बात भी किया है बांग्लादेशी फ्रेंड्स के साथ में। इंडिया के लिए उनके जनरली काफी मैं समझता हूँ कि डीप सीटेड फ्रेंडशिप का और ब्रदरहुड का फीलिंग अभी भी है। लेकिन वो ये समझते हैं कि चूंकि शेख हसीना 15 साल से है, और वो ये सोचते हैं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में they did not get any representation whatsoever. They did not get any relief, and she was able to continue because of India's support. That is their premise.
Now, that is something, and I always tell them, I said that any foreign country for that matter, whether it is India, China, or USA, do not work in a vacuum. You work with the government of the day for the benefit of the people. And India's neighborhood first policy, which is a non reciprocal policy, whether it is investments in infrastructure, whether it is investment in their economy, in their capacity building, that is not for the government per se, that is for the people of that country. So India has always wanted a stable, prosperous, developed neighborhood, and India has worked a great deal with Bangladesh. That's why Bangladesh's economy, the way it has grown, it has graduated from a developed, underdeveloped country to developing country status. It is doing very well compared to Pakistan. So, but this is a, I would say, a battle of perceptions. And what Mr. Yunus has said, he has just tried to repeat that. You know, he had hundreds of cases slapped by Sheikh Haseena's government against him. So he has his personal grounds as well. But let us see. His advice is that India should invest more in the people, which it already does. There is not a, I mean, everything is directed at the people. It is for their benefit. But this is something maybe we were not able to communicate that effectively at the grassroots level. Secondly, I think that in diplomacy, you should also keep all your eggs in different baskets. Sir, sir, to the Hindu question, sir, 22% the population, 22% in 1951 to 8% now, right now, sir. Or Hindus were a very active participants in the Bangladeshi freedom struggle. ऐसा नहीं था sir कि they like the Razakars they sided with the Pakistanis or anything of that sort. They were equally as big a freedom fighter as anybody else from Bangladesh. Bangladesh, उसके पहले Pakistan, उसके पहले Afghanistan. It appears that these countries are not good for Hindus per se. And 8% is a very small minority, sir, yet being targeted around Bangladesh. I mean, cities they might be holding protests in the cities, which might be comparatively safer. But villages, the reports, the videos which are coming in are horrific, sir. How long can India afford to leave this matter as Bangladesh's internal matter if these attacks don't stop? Well, I think the Prime Minister was absolutely right in conveying to Mr. Yunus in his very first statement a message of congratulations that the minority should be protected. Not only Hindu, but in Christians, Buddhists, whosoever is there. And this is something India has requested. Now we consider they are Bangladeshi citizens. India considers them as the part of Bangladesh. They have been part of the progress of Bangladesh, development of Bangladesh. They have been the actors. They have contributed to the growth story of that. And that is clearly evident from what Mr. Yunus says, or his home minister yesterday apologized to them. But during these kind of mobocracy that happens, in that these deep-seated, I would say, the goon elements of the society or radicalized elements of the society try to create more venom against minority communities, and that causes a major problem. तो अब जा जाके जैसे मंदिरों में कर रहे हैं, मैं जब वहां पे था, कुछ तो गवर्नमेंट ऐसी भी हैं जिन्होंने हिंदूज को काउंट ही नहीं किया उसमें। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब वहां पे था, जनरल इरशाद की सरकार थी और 2 करोड़ हिंदू थे उस वक्त वहां पर और 10 करोड़ मुसलमान थे। लेकिन शाह साहब हमेशा हर एक स्पीच में 10 करोड़ मानो, 10 कोटि मानुष, he will only talk of 10 कोटि मानुष, he will not take 2 other कोटि मानुष, not even count them. There were Hindu Muslim rights, there were things like, but they were all perpetrated with the connivance of the then government. But right now it seems that it is a section of the Bangladeshi groups which are anti-India, anti-Hindu, who are trying to attack them. And this is the responsibility of those who are in the interim power to protect them. And that's what precisely these people wanted. As far as India is concerned, I think we have done the right thing by telling the government, and if they want any help, India should be able to provide the help in restoring calm and law and order in the country. So this would be a good gesture from our part. But more than that, in my view, the only other thing that you can do perhaps is, if you really are so concerned about the Hindus, this is bringing bad name to Bangladesh.
The whole world is looking at it, that what is happening, and we're seeing in the international press also that these attacks are continuing. More than 205 attacks in, let's say, 52 villages or 52 villages area, rural area, as you say, is far worse. Only other thing is open your borders, get them into India. That's not the solution. सर ये This is not the क्वेश्चन right solution. सर ये क्वेश्चन इसलिए भी Because मैंने रखा था सर आपके सामने कि पहले अफगानिस्तान सर फॉलोड बाय पाकिस्तान द हिंदूज हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड वर्चुअली एलिमिनेटेड सर अफगानिस्तान से तो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन सर जिस तरह से कन्वर्जन चल रहे हैं जिस तरह से उनके ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है एंड इफ बांग्लादेश आल्सो दे मीट द सेम फेट सर then the rise of Islamic forces. I mean, this is a geopolitical and not a religious question, sir. The rise of these Islamic forces all around India, because as long as the population is cosmopolitan, sir, society एक balance रखती है सर अपने आप पे जहाँ homogenic और you are right. monolithic हो जाएगी तो सर इसका geopolitical impact तो अच्छा नहीं पड़ेगा देश के लिए हमारे देखिए जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि अगर लेट्स जस्ट थियोरेटिकली presume that what kind of action one can envisage against a sovereign nation openly. You can't do much. I mean, if you want to do it, then okay, we want to go and protect them. On what basis? They are not your citizens in the first place. So either you make them, like today I read in the paper that more than 506 who came from Afghanistan got the Indian citizenship. So we CAA is in operation. Home Ministry has set up a committee which is monitoring the situation on a daily basis. Indian government authorities are in touch with the army. Our High Commissioner is in touch with the forces, with the leaders. They are themselves apologizing publicly to the minority communities. And as far as the government of the day is concerned, they think and they're at least their actions, they are appealing to the people. And there are instances also where a lot of Muslims, students, and others are also protecting the Hindus. You know that those incidents have also come. Dr. Jaishankar mentioned it in his statement in the parliament. So Pakistan is a different basket case altogether. There, the Naya Pakistan of Imran Khan actually became the worst Pakistan. So there, of course, they have reduced. Even here, a large number of people would prefer to come to India because of opportunities. But today, Bangladesh also was doing reasonably well. So most people would not have preferred to come there. They would like to live happily and contribute to the prosperity and development of Bangladesh. Afghanistan was again a very peculiar situation. You had a very radical fundamentalist regime in that country, Taliban, which came to power. And so therefore people were scared and they left. And they are in India now, most of them. So I think that the choices that we have, apart from continuing dialogue with our friends in Bangladesh and support them in controlling these chaos, I don't think that we have very many options, except unless you wish to have all the refugees into your country. we can only hope that better sense prevails and things settle down on that front A lot needs to be done by the government of the day. Sir, agreed, sir. In Bangladesh, yes. Sir, Sajeeb Wazed, the son of Sheikh Haseena, he said that Bangladesh will be the next Pakistan after his mother was deposed, obviously. So Bangladesh will be the next Pakistan. Given the history of the two countries, Pakistan and Bangladesh, and what happened between them, and yet the increasing radicalization in the Bangladeshi society, do you really see that happening? Well, I think that, I hope not, number one, that this should not happen because there's no doubt that there are several opposition parties, including BNP and the Jamaat-e-Islami, who have affinity to Pakistan for different reasons. But I would only hope that they must think for Bangladesh first. It is not going to become a Pakistan in that sense. But definitely, if the radicalization increases, like it used to be there before, and Sheikh Hasina's time, at least that was contained, especially against India, which we saw the attacks by various groups across the border. And so that was one of the major contributions. And this is precisely the only thing that India looks at from its partners is uh, ensure security of India from the elements which are
in their countries or from their soil. So I think that his statement was more uh, political in nature because, see, today, if I go by whatever the student leaders are mentioning all along, they don't want any of the existing political parties to come in power. That is something that you see most of the student leaders are saying we don't want any of them. They were happy with Mr. Yunus continuing, who's the less political person in that sense. But they don't want army. They don't want. So therefore, it will be, uh, hopefully, they will choose the government carefully. Likewise, Awami League also has an existential challenge today. It's a big party. It has a big cadre, but their cadre is being attacked. As you know, several ministers, their properties are being burnt. So it's not only Hindu Muslim. It is also the Muslims are also killing Muslims because of political differences, a highly politicized society. So I think that in that sense, uh, the immediate priority for the government and the army should be to bring about order, law and order within the Bangladesh system, not only in Dhaka, but in far off places where these incidents are being reported from. So the last question, the geopolitical importance and significance of Bangladesh. With the given chaos as of now, what are the implications for India's security and strategic concerns in the region if this continues? Because the Indo-Pacific region passes through Bangladesh, nearby Bangladesh. China was very friendly with Sheikh Haseena. US is sort of supposed to be friendly with khaledazia. We don't know what is happening in the future, but we know, I mean, we would like to know what is the geopolitical significance for India if this continues, this instability. Well, Bangladesh has been our, I would say, the linchpin of our neighborhood first policy. We invested about $8 billion in their infrastructure, in their capacity building. We have resolved all our outstanding issues with Bangladesh in an amicable manner. We are helping them in every which way possible in their quest for development. And, in the regional context also, whether it's Indo-Pacific or whether in the context of the new initiatives, sub-regional initiatives, which India started off, this BBIN and the BIMSTEC, those organizations are equally important. And I think that way the Bangladesh government eventually moves along will also have an impact on these important initiatives where our Act East policy blends with the neighborhood first policy. So today, unfortunately, we have a very volatile neighborhood. It's not only Bangladesh. We've seen Sri Lanka, we have seen Maldives, we have seen Afghanistan, Myanmar. So all these countries, there are problems. But the saving grace, in my view, is, and not all countries are alike, but if you were to think of it, look at Afghanistan. The Taliban are said to be anti-India, but eventually today Taliban is asking you to come back, complete the project, help them in their capacity building in a big way. You have uh, Myanmar, we are continuing to work with the government which is there. In Maldives, is a turnaround case. You just saw, yes, 2 days ago, Dr. Jaishankar was there flagging off all these major projects which we are delivering. They have also approached India for rescheduling of the debt, $50 billion, providing them food and this. So eventually, what is happening? Sri Lanka, look, we bailed them out completely. So all these countries in our neighbors who have, for some reason, had this anti-India feelings, have realized that India's assistance, cooperation, and benign posture is, in fact, in their national interest. So I have no doubt that Bangladeshi people who have seen it for so long, and in my view, probably are misled. Because, see, I mean, I always tell my Bangladeshi friends, any foreign country always works through the government of the day Hmm. if you want to have any collaborations, any projects, or anything. Now, if Sheikh Haseena happens to be in the government for 15 years, who does India work with? So it's important. It happens in every country in the world, everywhere. But where does the benefits of the projects, benefits of various schemes, they go? They go to the people at the end of the day. And from where it is coming,
That is what I think we need to communicate more effectively to the people once the things settle down. Thank you so much, sir. I would like to conclude on that note. It has been very informative, sir. बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, और हम आपके पास Thank you, भविष्य में Professor. भी आते रहेंगे, सर, ऐसे विषयों पे चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।